To prove that 1 plus sin A upon 1 minus sin A whole to the power 1 by 2 is equal to sec A plus tan A. So LHS is equal to 1 plus sin A upon 1 minus sin A whole to the power 1 by 2. अब यहाँ पे होल टू द पावर 1/2 है तो हमको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे ये दोनों टर्म्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर स्क्वायर हो जाए। अब स्क्वायर करने के लिए हम एक तरीका कर सकते हैं जिसमें हम रैशनलाइज कर लें। सो 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 plus sin A whole to the power 1 by 2. So this will give you 1 plus sin A whole square upon, this is A minus B and this is A plus B, right? So A minus B into A plus B gives you A square minus B square. So we'll write here 1 square, that is 1 minus sin square A whole to the power 1 by 2. This is equal to 1 plus sin A whole square into 1 by 2 upon 1 minus sin square A is cos square A. So cos square A whole to the power 1 by 2. This is equal to 2 will cancel and we'll get 1 plus sin A upon cos A. दोनों टर्म्स को सेपरेट करो, 1 upon cos A plus sin A upon cos A. This is equal to 1 upon cos A is sec A plus sin A upon cos A is tan A. And this is RHS, hence proved.